Hello students. So today we are going to solve question number 9 of cash book from DK Goel. ठीक है? Now see the question. Question number 9. On the 1st April, balance of the cash in hand is 4,000 and overdraft as at bank is 50,000. Okay, it means कि cash in hand, we have the cash in hand of 4,000 and bank overdraft is 50,000. So the entry will be what? To balance BD 4,000. ठीक है? ओपनिंग बैलेंस इज डेबिट साइड, तो एसेट है कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, तो टू बैलेंस बीडी इज 4,000 एंड बाई बैलेंस बीडी इज 50,000 बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट इज द लाइबिलिटी. ओके, एंड द लाइबिलिटी विल ऑलवेज पोस्ट ऑन द क्रेडिट साइड. द नेक्स्ट इज इन्वेस्ट फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख आउट ऑफ विच 60,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है टू कैपिटल 1 लाख रुपीज का. क्लियर है, जिसमें से बैंक में हम कितना कर रहे हैं 60,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000. ठीक है, टोटल कैपिटल जो प्रोपराइटर है टोटल कैपिटल 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें से 60,000 वो बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है. तो कैश में कितना कैश कितना रखेगा अपने पास, डेबिट सॉरी बैंक कैश अकाउंट डेबिट 40,000. क्लियर है. सो द एंट्री विल बी व्हाट, टू कैपिटल अकाउंट. इन द कैश वी राइट 40 एंड इन द बैंक वी राइट 60,000. क्लियर, टोटल विल बी 1 lakh. द नेक्स्ट इज ऑन द 5 April sold goods for the cash 30,000 plus CGST and SGST. Clear. So the entry will be what, sales account debit we sold the goods for the cash, so the entry will be cash account debit to sales account to output CGST and to output SGST. यही तो होता था, एंट्री याद होगी जीएसटी वाली. So in the sales column we write 30,000. In the sales we write 30,000 and output is 1,800. 6% of 30 will be 1,800 and 1,800. So cash is in the debit section, so comes to the debit column, and in the cash column we write 30,000. Sales account debit 30,000 to output CGST will be 1,800 and to output SGST will be 1,800. Okay, clear है. Now the next is purchase goods for 55,000. Same as this, but it is the case of purchase. Purchase goods of rupees 55,000 plus CGST and SGST 6% each and issue a check for the same. ठीक है, we payment this by the bank check. ठीक है, so the entry will be what, entry will be by purchase account debit 55,000 by input CGST and input SGST. Whenever we purchase something, we pay the input CGST or input SGST. And the 6% of 55,000, 6% of 55,000 is 3,300. Clear है, 6% is 3,300. Clear. The next is paid to Ram Vilas, our creditor, 25,000 and discount allowed by him is 1,000. Okay, Ram Vilas was my creditor. ठीक है, Ram Vilas was my creditor of 26,000. He allowed me a discount of 1,000. And we pay only 25,000 to him. So entry will be by Ram Vilas account 25,000 by cash, because we write down the exact amount that we pay to the creditor or receive from our debtor, not the discount allowed or discount received. Clear. The next is rent 8,000 plus CGST and SGST 6% and paid by the check. So the entry will be by rent account debit 8,000 and the rent is the expenses. ठीक है,
So we pay the input CGST and input SGST of 6% of 8,000 is 480, 480. Clear hai? The next is office furniture purchase and the check of 22,400 issued for the same including the CGST and SGST 6%. ओके, आपने प्रोपराइटर ने फर्नीचर खरीदा कंपनी का और इन CGST और SGST टोटल अमाउंट मिला करके उसने 22,400 पे कर दिया, जिसमें फर्नीचर भी है GST भी है, टोटल अमाउंट बता दिया है। कह रहा है कि आप इसकी एंट्री पोस्ट करो। तो अब हम क्या करें भाई? देखो, या तो हम ये करें कि भाई फर्नीचर अकाउंट लिख के यहाँ पे 22,400 लिख दें, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे GST पे किए हो आप तो उसकी पोस्टिंग करना जरूरी है, दिखाना जरूरी है कि आप GST कितना पे किए हो। क्लियर? सो दिस इज द रॉन्ग वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6% CGST and 6% SGST. The total amount of GST will be 12%. Okay. Now 12% of 22,400 will be 2688. Okay, 2688. यानी कि ये this is the tax amount. Okay, and if we deduct this from 22,400, we get 19,712, and this is the actual amount of furniture. Clear hai? Are you getting my point? This 19,712 is the actual amount of furniture. So the by furniture we write is 19,712. Okay, and input CGST will be ये है 12%, यानी इसमें this include the input as well as the input CGST and input SGST 26,088. It has included both the input CGST and SGST. So half of this 26,2688 divide to 1344. So in the input CGST we write 1344 and input SGST 1344. Okay, now the next is drew the check for the personal use of 5,000. Clear? Drew check for the personal use. So the entry will be what? Drawing account debit to bank. हमारा बैंक कम हो गया ना, चेक से पेमेंट, चेक से मतलब निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग कर रहा है। सो इन द बैंक कॉलम वी राइट बाय ड्राइंग अकाउंट 5,000. Then 18th is collection from the Atul 15,000 and deposited into the bank on the 19th April. ठीक है, सो द एंट्री क्या होगी? देखिए 18th को हम अतुल से कुछ चेक कलेक्ट कर रहे हैं, कैश कलेक्ट कर रहे हैं, कैश कलेक्ट कर रहे हैं, एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ठीक है, बैंक की एंट्री लेके चलते हैं। तो 18th अप्रैल को क्या हुआ होगा? चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू अतुल। क्लियर है? वी रिसीव अ चेक फ्रॉम द अतुल ऑन 18th April, but we deposit it on 19 April. So 19 April, on 19 April the entry will be क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, मेरा बैंक बढ़ गया होगा, टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट। यही तो अकाउंट हुआ होगा, एंट्री हुई होगी ना। So on the 19th April we write to check in hand account debit and in the bank column we write 15,000. Okay, on the next देखिए goods sold to Amrit Raj for 80,000 plus CGST and SGST each. एंड उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखो 25 को कह रहा है कि रिसीव अ चेक ऑफ 88,000 फ्रॉम द अमृत राज इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने 80,000 का गुड सोल्ड किया है अमृत राज को, GST और CGST, लेकिन यहाँ पे कहीं भी कैश का डिस्कस नहीं कर रहा है कि कैश और बैंक पेमेंट हो रहा है। ठीक है, इट डोंट डिस्कस अबाउट द बैंक और कैश पेमेंट। सो ऑन द 25 April
we see that receive a check of 88,000 from the Amrit Raj in the full settlement of his account. So on 25 April, we receive a check from the Amrit Raj, full settlement of 88,000. So our entry will be to Amrit Raj account, and in the bank we write 88,000. Now the next is 29. Drew from the bank for the salary of office staff 25,000. Drew from the bank for the salary. So the entry will be what? Salary account debit to bank. Okay. And we draw the salary of 25,000. So in the salary we write in the bank column 25,000. Okay. And again paid the salary of manager by the check of 10,000. So again by manager salary account, and in the bank we write 10,000. Clear? So let's calculate this. 44,000 plus 30,000, 77600, 77600, and 60,000, 15,000, 88,000, 163000, 163000. It is 25,000 and 50,000, 55,000, 3,300, 8,000, 19,700, 5,000, 182960, 182960. Clear है? So 77,600 minus 25,000. Oh, sorry. 75, 52600. So by balance CD 52600, and the total receipt is 1,63,000 and it is 1,82,960. So on 30 April, now see, on 30 April to balance CD, देखिए यहाँ पे रिसिप्ट ज्यादा कम है, पेमेंट ज्यादा है. ठीक है, पेमेंट ज्यादा है. सो इट इज द डेबिट बैलेंस टू बैलेंस CD 1,82,960 में से 163,000 माइनस किया 19960, 19960, and the amount will be 77600, 182,960, 7760, and 182,960. क्लियर है? अकाउंट क्लोज. ठीक है. सो देयर इज द डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम. क्लियर है? अभी बैंक में आपके पैसे कम हैं. सो बाय दिस वे क्वेश्चन नंबर 9 is completed, and the double column cash book is also completed. And in the next video we will see what is petty cash book and solve some question of this. Clear? So see you in the next video. Clear?